Everyone. I hope you can see me and you can hear me. Abhi tak you were just watching a recording of one of my trainings. So we are starting today's session, inshallah ta'ala. So आज का हमारा जो session है, for those of you who are on YouTube, inshallah, I will. This is the starting time for you, and for next 45 minutes, stay with us. And after 45 minutes, I will close the YouTube transmission streaming, and inshallah then we'll continue with the rest of the programs. And those of you who are with me on Zoom here, welcome everyone. And inshallah we have many things coming up. There will be some specific exercises for you. So हमारा आज का जो सेशन है, this is about mastering our states. Okay, and in taking charge of our states. If you think about this, हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं, it all depends on the state that we are in. Okay, और state को अगर हम थोड़ा सा define करना चाहें, बिल्कुल एक layman terms में अगर हम बात करें, so state basically is, it refers to जो जिसे हम आसान लफ्ज़ों में मूड कहते हैं. Okay, किसी वक्त में किसी सिचुएशन में हमारा मूड क्या है, और अगर हमारा मूड अच्छा होता है, यानी हमारी जहन की कैफियत अच्छी होती है, तो हम लोगों से मुख्तलिफ अंदाज से ताल्लुकात कायम करते हैं. और अगर हमारा मूड खराब होता है तो हमारा अंदाज मुख्तलिफ हो जाता है. उसके नतीजा क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे या बुरे होते हैं. यानी हम लोगों शिकायत करते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसे बात करी. एंड सिमिलरली समटाइम्स अदर पीपल, they are not in a good state, and because they are not in a good state for whatever reason, and वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो हमें लग जाती है, हमें बुरी लग जाती है, हमें तकलीफ दे जाती है. It's because they are not in the right state. हम जब many years ago, I read a book. I think उसका नाम था The 1 Minute Manager. उस किताब में एक बड़ी छोटी सी एक कोटेशन थी, एक पूरे पेज के ऊपर वो लिखी हुई थी. वो कोटेशन मुझे याद है. कोटेशन ये थी, people who feel good produce good results. Okay? वो लोग जो अपने अंदर अच्छा महसूस करते हैं, वो अपनी जिंदगी में अच्छे नताइज प्रोड्यूस करते हैं. एंड पीपल हु फील गुड ऑल्सो मेक गुड डिसीजंस. एक बहुत आम चीज आप देखेंगे जहां पर भी, यानी रिश्ते टूट जाते हैं, घरों में तलाकें हो जाती हैं, या लोग अपने कारोबार बंद कर देते हैं, या जॉब्स छोड़ देते हैं, या किसी भी किस्म के, यू विल फाइंड उसके बैक पे इट्स द स्टेट द पर्सन वाज इन दैट टाइम. ओके, यू विल नॉट फाइंड कभी कोई शख्स जो है किसी ने बड़ी मोहब्बत में आके किसी को तलाक दी हो. जो तलाक दी थी उसकी जो उस वक्त उसकी जहन की कैफियत थी, वो एक नेगेटिव कैफियत थी. और उसमें लोगों ने कोई ऐसी बात कर दी या कोई ऐसा अमल कर दिया जो कि उनके लिए उनकी फैमिली के टूटने का बायस बन गया. तो ये जो स्टेट है बड़ी अहम चीज है. ओके, और इसको समझना, इसको जानना और इसके ऊपर कंट्रोल करना, ये एक इंतहाई अहम चीज है. नाउ before I begin with the topic here, few disclaimers. I'm just as human as you are. If I'm teaching you something, it doesn't mean that I am perfect. मेरा हरगिज मकसद ये नहीं है. Okay? इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं हर वक्त अच्छी स्टेट में होता हूं, और ये नामुमकिन बात है. Okay? So sometimes आप इन तमाम चीजों को जानने के बावजूद, you may find it's like negative states आपके ऊपर आती हैं. But the point is कि it's not कि आपके ऊपर कोई स्टेट आई. The question is how quickly आप उससे बाहर आते हैं. आपने कितना अरसा उस कैफियत में गुजारा. That's what really matters. कि एक कैफियत आ गई, बिकॉज जो कैफियत होती है वो हमेशा हमारे इख्तियारी तौर पे हमारे साथ नहीं आती. हमारी जिंदगी में बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं. इस पे हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में कुछ बात करेंगे. वो जो ट्रिगर्स होते हैं वो हमारी कैफियत के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, हमारी कैफियत के ऊपर मुतासिर हो रहे हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट,
sometimes we get into wrong state. Okay, this could be आज बहुत गर्म दिन है जी. Okay, फर्ज करो, and just as an example, स्टेट को आप ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकेंगे. just think about this. फर्ज कीजिए कि आप रात को आपको पता चला है कि आपका करोड़ रुपए का इनाम निकला. आजकल करोड़ रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, बट चलो करोड़ रुपए का इनाम निकला है. ओके, और आपको किसी गेम शो से कॉल आई है, और जेन्युइन वाली कॉल है, स्कैम वाली कॉल नहीं है. ओके, और जो कॉल आई है उस कॉल के अंदर आपको कहा कि जी आपका 1 करोड़ इनाम है, और आपको इसमें साथ में 5 तोले सोना भी मिल रहा है, और आपको साथ में गाड़ी भी मिल रही है, और उम्रे का टिकट भी दिया जा रहा है. एंड यू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू आर रियली हैप्पी एंड यू आर रियली एक्साइटेड. आप सुबह जब आपको टाइम दिया है, आप घर से निकल रहे हैं, आप बिल्कुल तैयार हो यार हो कि आप घर से जब निकले, आप बाहर आए और आपने देखा अरे आपकी गाड़ी जो है उसका टायर पंक्चर है. okay? How will you react? Will you like shout or anything, or will you say जल्दी से टायर चेंज करो? Okay, and then you notice अरे जेब में मोबाइल नहीं है, एंड फिर आप किसी को बोलते हैं यार जरा वो मेरा मोबाइल जल्दी से उठाकर लाना. अब वो मोबाइल लेकर आ रहा है, एंड यू आर रियली नाउ थिंकिंग अबाउट वो करोड़ रुपए जो आपको मिलने वाले हैं, वो गोल्ड जो आपको मिलने वाला है, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द सेरेमनी जो आप अभी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दोस थिंग्स. और इतनी देर में जो मोबाइल लेकर आ रहा था, अचानक उससे मोबाइल नीचे आपका गिरता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है. हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? What will you do when anything like that happens? Will you be like, इसको, और will you, चलो कोई बात नहीं, it's like 1 करोड़ रुपए तो अभी मिल रहे हैं, दूसरा मोबाइल ले लेंगे, what's the big deal, right? Now imagine another scenario. आपको ऑफिस से कॉल आई है कि, और आपके बॉस ने आपको जो है ना जोर जोर की सुनाई, और उसने कहा है कि तुम्हारा आज आखिरी दिन है, तुम आओ ऑफिस, तुमसे बात करनी है. एंड नाउ यू आर इन टेंस स्टेट. अब आप घर से निकलते हैं, बाहर आते हैं, देन देखते हैं आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर है. हाउ विल यू फील? एंड देन यू नोटिस ओह जेब में मोबाइल भी नहीं है, और फिर आप किसी को कहते हैं जल्दी से मेरा मोबाइल लेकर आओ, मैं टायर चेंज कर रहा हूँ. आप इधर टायर चेंज कर रहे हैं, वो मोबाइल लेकर आ रहे हैं, अचानक मोबाइल नीचे यूं गिरता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है. ओके, नाउ हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? हाउ विल यू रिएक्ट? जस्ट थिंक अबाउट दैट. गौर कीजिए, इन दोनों सिचुएशंस में जो होने वाले इवेंट्स हैं, टायर पंक्चर होना और मोबाइल का गिर कर स्क्रीन का टूट जाना, ये दोनों इवेंट्स सेम इवेंट्स हैं, मगर हमारा जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स होगा वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि क्या हुआ है, बल्कि उस पे डिपेंड कर रहा है कि हम इंटरनली कैसा फील कर रहे हैं. अगर हमारी कैफियत अच्छी होती है, हमारी स्टेट अच्छी होती है, हम बुरी से बुरी चीज को हम बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं. और जब हमारी कैफियत खराब होती है, हमारी स्टेट खराब होती है, हम अच्छी चीजों को भी हैंडल नहीं कर पाते. इस वजह से अपनी स्टेट्स के बारे में जानना, इनको समझना और इनको कंट्रोल करना सीखना एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है. और इसी चीज पे हम इस अब बात शुरू कर रहे हैं. Okay, I hope this is clear. Let me know. There are not everyone who has, by the way, joined today on Zoom or has signed up on Zoom has joined still. If for any reason अगर आप गलती से इत्तेफाक से YouTube के ऊपर हैं, तो बराए मेहरबानी इधर आ जाइए. Okay, because we will be uh, going to it's like I'll be stopping the YouTube transmission after 45 minutes. So please get on Zoom if you are one of those people who have signed up. So I'm seeing there are a number of people saying Assalamu alaikum on YouTube. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So I hope aapko, you get the idea. You understand this. Okay, this is something really important to understand. This is something really powerful.
सो अब हमारी जो कैफियत होती है, हमारी जो स्टेट होती है, ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? कि इसकी कौन से दो कंपोनेंट्स हैं, कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो कि एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में? तो हमारी कैफियत के जो दो एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक है हमारी फिजियोलॉजी। हम अपनी बॉडी को, अपनी, आप आसान लफ्जों में जिसे लोग बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आगे मैं इस पे बात करूंगा आफ्टर 45 मिनट्स, ओके। बट जो उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, अगर उसको ब्रीफली मैं आपके सामने रखूं, इट्स लाइक आपके शोल्डर्स, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपकी ब्रीदिंग, आपकी आईज की मूवमेंट, आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। कि मैं इसकी डिटेल्स में बाद में जाऊंगा, लेकिन फिजियोलॉजी इज वन ऑफ दोज फैक्टर्स। सो फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ एज यू आर लिसनिंग टू मी, आई वॉन्ट यू टू नोटिस आपका इस वक्त, आपकी जो जहन की कैफियत है वो कैसी है। You may be excited, you may be happy, you may be curious, or you may not be very happy. Okay, you may not be very excited. Okay, but just notice how it is right now. And also notice right now in this moment, how are you sitting? Now, I understand that you're looking at this screen or, watching or hearing what I'm saying. But how are you sitting? आपका, it's like body जो है स्ट्रेट है या बेंट हुई है, आपका सर किसी एक साइड पे झुका हुआ है या सर स्ट्रेट है, सर नीचे को है या ऊपर को है। ये जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, इनके जो बहुत सारे इफेक्ट्स हमारे ऊपर होते हैं, उनमें से एक इफेक्ट ये होता है कि हमें सर झुका के जीना सिखा देती है। Okay, have you thought about that? Okay, so I have this mobile phone and I'm like, सर झुका के जी रहे हैं। Okay, and we keep doing that for hours and hours and hours until it becomes so natural. Okay, no wonder हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम सर उठाने की कोशिश नहीं करते। Okay, लैपटॉप लो बच्चों, सर झुका के जियो। Okay, so we have this, okay, कि हमारी ये जो फिजियोलॉजी है, सो जब हमारा सर ये झुका हुआ होता है तो हमारे अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन वाली बातें कर रहा हूं मैं आपसे। देखिए, और हमारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे अंदर मनफी कैफियत को परवान चढ़ाते हैं। कितनी खालिस उर्दू बोलने लगा हूं मैं। Okay, you wouldn't know that because it's like, but just think about this. जब हमारा सर नीचे होता है, and how often do we do that? So हम अपने आप को अनकॉन्शियसली कंडीशन कर रहे होते हैं। अपने अंदर से मनफी, हमारे अंदर से वो केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं, हमारे ब्रेन से वो केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं जो हमारे अंदर मनफी सोच और मनफी कैफियत को मुतासर करते हैं। नतीजतन देख लीजिए, हम आमतौर से कितने पॉजिटिव होते हैं या कितने नेगेटिव होते हैं, ये हम सब जानते हैं। मगर उसके पीछे ये जो एक फैक्टर है वो क्या है कि हम अपनी बॉडी को, हम अपनी फिजियोलॉजी को कैसे यूज करें। So coming back to my questions, like right now, as you are sitting and you're watching this, how are you sitting right now? Just notice that. And I want you to notice your current level of energy. और अगर आप on a scale of 0 to 10 अपनी इस फिजियोलॉजी को कोई नंबर दें, where 0 means बिल्कुल नीचे एनर्जी, 10 means it's at the top, what number will you give? Give it any number. You don't even have to tell me, but just for your own understanding. Because किसी भी चीज को लर्निंग में एक जो अहम चीज होती है वो ये होती है हमारी अवेयरनेस। हमें जब अवेयरनेस ही नहीं होती, हमें किसी चीज का अंदाजा ही नहीं होता, और हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे साथ हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं
उस एक्सपीरियंस के पीछे कोई बाहर से होने वाले वो आहिनी ताकतें नहीं है जो हमारे ऊपर कर रही हैं, बल्कि हमारी अंदर की ताकतें हैं जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, जिसके नतीजे में हमें ऐसा फील हो रहा है। ओके, यानी बाहर की ताकतें भी हमारे ऊपर उस वक्त असरअंदाज होती हैं, उस वक्त ज्यादा इफेक्ट करती हैं जब हमारी अंदर की ताकतों को हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। Okay, so I want you to just notice right now your level of energy. Okay, and I want you to notice how are you breathing right now. So कुछ लोग चेस्ट से ब्रीथ कर रहे होंगे, कुछ लोग डायफ्राम से ब्रीथ कर रहे होंगे, कुछ लोग एब्डोमेन से ब्रीथ कर रहे होंगे. Just notice your breathing. And I want you to notice आपके shoulders की position क्या है. ऊपर है, नीचे है, आपके चेस्ट की पोजीशन क्या है. Just observe yourself. Notice आपकी जो कमर है, is it straight or is it bent? spine आपकी जो है कमर झुकी हुई है, सीधी है, तनी हुई है. It's like just notice how it is right now. Now आपके जो चेहरे के मसल्स हैं उनकी क्या कैफियत है. Are they like stretched, tense, relaxed? Notice how they are right now. Notice आपकी हाथों में इस वक्त जो फीलिंग है कैसी है. अगर आप राइट हैंडेड हैं तो गौर करें आपके राइट हैंड में इस वक्त फीलिंग कैसी है, और लेफ्ट हैंडेड है तो गौर करें आपके लेफ्ट हैंड में इस वक्त फीलिंग कैसी है. एंड देन नोटिस दोनों हाथों की फीलिंग्स, एंड देन दोनों पैरों की फीलिंग्स. Okay, so what you're doing right now is just observing few things, just noticing few things. This is the current situation. एक चीज एन मुमकिन है कि just by start observing you may start noticing कुछ changes इनके अंदर हों. That's fantastic. Okay, चीज क्या है कि हमने कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, कभी हमने इन चीजों के बारे में सोचा नहीं, तो हमें हो सकता है कुछ अजीब सी लगे. इट्स लाइक कोई चीज जब हमने नहीं की होती है और जब हम इसे पहली बार करते हैं तो हमारे जहन में यहाँ पे नए कनेक्शंस बिल्ड होने शुरू हो रहे होते हैं. और जब ऐसा हो रहा होता है तो हमें थोड़ा कुछ कुछ एक अनकंफर्टेबलनेस का भी एहसास हो सकता है. इट्स लाइक आई नेवर थॉट ऑफ दिस. ओके, जस्ट बेयर विद दैट. ये तमाम चीजें जो है ये लर्निंग एक्सपीरियंस का हिस्सा है. ओके, जस्ट स्टे विद दैट and just notice right now. Just notice yourself right now. And I want you, इसी कैफियत में रहते हुए, okay, say a small sentence and say it out loud. मिसाल के तौर पे अपना नाम बोलें. अगर फर्स्ट करें मैं बोलूं, वैसे जी मेरा नाम कामरान सुल्तान है. Okay, so I want you to say a sentence or maybe two sentences. So like if I say मेरा नाम कामरान सुल्तान है, I'm from Pakistan and I live in New Jersey. Okay, so I want you to say a few things. And notice जब आप बोल रहे हैं आपकी आवाज में कितनी एनर्जी है, आपकी आवाज आप कहां से जनरेट कर रहे हैं, आपकी आवाज में कितना पावर है, आपकी आवाज के अंदर कोई इन्फ्लेक्शंस आपको सुनाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे. जस्ट नोटिस दैट. जस्ट नोटिस. Now I want you to try some things. Okay, I hope you're making these observations. I hope you're doing this. Let me just quickly have a look at what's happening here. And okay, so
I see that there are some numbers and some comments. I'm sorry, मैं अभी सारे comments नहीं पढ़ सकता and I'll not be able to answer those questions either. But I want you to try something different now. Okay. Now, once we have made those observations, I want you to do something. I want you to sit straight. Okay. So अपनी spine को बिल्कुल straight कर लीजिए. अपने shoulders को पीछे कर लीजिए. Okay. And then अपनी breathing को थोड़ा सा chest say just like breathe high in chest. Then bring a smile on your face. It's like stretch your facial muscles. Okay. And keep it that way. And then अपनी आंखों को अपने eye level से थोड़ा ऊपर ले जाइए. And then keep looking up. And keep your face like this. Okay. Now, when you're doing it, don't look at the screen. Do this. याद रखो NLP और ये इन चीजों को सीखने के लिए आपका experience is your guide. So इसलिए screen को ना देखें, experience कीजिए and you will get it best. Now I want you to make a fist, it's like tight fist, right-handed and the right से left hand या चाहे दोनों से बना लें. Just make a fist and then or do this. Yes, 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 yes. Okay. और अगर आपने खाली fist बनाई, you can say yes, yes, yes. Okay. Do it with power. Now आपकी जो tone है, I want you to do something. आपके घर में अगर लोग हैं उनको बता दें मैं सिर्फ exercise कर रहा हूँ. Okay, just let them know so nobody is disturbed. Okay, but I want you to do this. I want you to take a deep breath. And as you do, hold your breath. And hold your breath and keep holding, keep holding, keep holding, keep holding, keep holding, keep holding. And then now, मैंने जब क्लास में लोग कराते हैं, लोग पता है क्या करते हैं? Okay. No. Okay. Notice what I'm doing. Take a deep breath. Hold your breath. Hold your breath. Hold your breath. It's just like what people do. They say, and they say, सर मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा. I can guarantee अगर आपने किया तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay. Bring it out. Bring it out. Okay. Let's do it another time. Sit straight, spine straight, body straight, shoulders back. Okay. And then take a deep breath. Yes. हाँ करना था मैंने yes कह दिया. Because there is no hard and fast rule here. Okay. But the thing is, if you have done this, and I want you to notice your level of energy. I want you to notice your state. Do you notice any difference? Do you notice any change? अगर आपने किया है जो मैंने आपसे कहा, I can bet you experience difference. You will experience something different. लेकिन अगर आपने यूं किया, हाँ नहीं सर मुझे तो कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा, मैं पहले आपको बता दूं कोई डिफरेंस नहीं होगा. बिकॉज डिफरेंस होता नहीं है, डिफरेंस पैदा किया जाता है. ओके, डिफरेंस क्रिएट किया जाता है. डिफरेंस के लिए आपने एफर्ट करनी होगी. नाउ humans learn through repetition. Repetition is the key. Okay, so what I want you to do is I want you to just go back and do that thing. It's like, okay. And when you do that, by the way, अपना सर नीचे झुका लीजिए. बच्चों सर झुका के जियो. Remember that, okay? लैपटॉप लो, सर झुका के जियो. सर झुका के, shoulder drop, breathe low, okay? अपने चेहरे के मसल्स को भी रिलैक्स यूं लटका लीजिए. And just notice your energy. Okay. Then take a deep breath. अपने आप को स्ट्रेट कीजिए. अपने चेहरे के मसल्स को एक्सपैंड स्ट्रेच कीजिए. अपनी आंखों को ऊपर की तरफ कीजिए. Make a fist with one hand or both hands. अगर एक से करें, then you do this. Yes, 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 yes. And say it out loud.
Okay, let your family know that you are doing an exercise. Okay, if you do this, yes, 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 कोई देख तो नहीं रहा है. No, it will not work. मैं आपको अभी बता देता हूँ, it will not work. Okay, so you need to shout. Okay, and when you do that, okay, notice your level of energy. Does it change? Does it make any difference? Do you feel any different? Now I want you to try something. I want you to say that same sentence. मेरा नाम कामरान सुल्तान. जैसे मैं अगर बोलूं मेरा नाम कामरान सुल्तान है, मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है और मैं न्यू जर्सी में रहता हूं. I want you to say to yourself out loud and notice if there is any difference in your tone. Just notice that and let me know. Okay. So let me know if there is any difference. Yeah, people around will look at you. They will say, "इसको क्या हो गया अचानक से?" Many years ago, मैंने जब ये चीजें सीखी थी, this is like over 30 years ago now, and I wanted to get in control of myself. और मेरा हाल ये होता था कि मैं दो लोगों के सामने मेरी बात करने में मेरा हला खुश हो जाता था, मेरी बात नहीं होती थी. I wanted to learn these things. और मैं एक दो कमरे के घर में रहता था, मेरे साथ मेरी 5 बहनें होती थी, अम्मा होती थी, बट आई जस्ट wanted to do this and I used to practice this. और मैं प्रैक्टिस के लिए आपको पता है क्या करता था, बिकॉज मुझे भी ऐसा फील होता था उसका. ओके, समटाइम्स आई यूज्ड टू डू दिस कि मैं मुंह के ऊपर आगे जो है साइलेंसर के तौर पे तकिया रख के, एंड आई यूज्ड टू डू दिस एक्सरसाइज, शाउट आउट लाउड. बिकॉज अगर मैं यूं करूं तो कभी कभी घर वाले हैं, इसको क्या हो गया, इट्स लाइक बच्चे का खैरियत है. बट आई वांटेड टू डू दिस एंड आई डिड दैट and it made a world of difference for me. Okay, remember, repetition is the mother of scaling. If you really want to do this, if you really want to have control over your state, first start working on physiology. हम NLP में एक बात कहते हैं, change your physiology and state of mind will change. It shows, he's considered father of American psychology or father of modern psychology. Dr. William James, he said, emotions follow actions. If you want to change your emotions, change your actions. So if if you want to feel confident, act confident. If you want to feel energetic, act energetic. If you want to feel powerful, act powerful. If you want to feel any emotion, act that emotion out, and you will notice the difference. And you repeat that and you condition yourself through repetition. You will find you will be able to do that. It will become second nature to you. It will get into your muscle memory. But you have to do it. You have to repeat this. Okay, so let's do it once more. Okay, दोबारा से ऐसे आ जाइए. Okay, and even though I know मैंने क्लासेस के अंदर बहुत बार ये चीज देखी है कि जब लोगों को ये कराओ और because like they don't want to do it. But that's the key, that's the point. Because हमारे वो जो स्टेट नेगेटिव वाली होती है, वो हमारी मर्जी से नहीं आ रही होती है हमारे ऊपर. It just happens. Okay, we just get into that. So here we are bringing even that state deliberately. So because अगर हम उसको deliberately ला सकते हैं तो हम उसको deliberately खत्म भी कर सकते हैं. Okay, because हमने इस फिजियोलॉजी को चेंज करना है. और एक बात बताऊं, ये कोई नई चीज नहीं है. अगर हम मुसलमान हैं तो हमें तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बता कर गए. हमने नहीं छोड़ रखा है, क्या कर सकते हैं. गुस्सा आ रहा हो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, और करो. चेंज योर फिजियोलॉजी एंड योर स्टेट ऑफ माइंड विल चेंज. जब अल्लाह ताला से दुआ करो तो रो रो कर, गिड़गिड़ा कर करो. अगर रोना नहीं आ रहा है
तो अपना चेहरा वैसा बना लो. Change your physiology and your state of mind will change. You get this? Understand this. Okay. I'm not teaching you anything new. You already know it. It's just कि हमने कभी कभी मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने छोड़ो बात दूसरी तरफ चल जाएगी. Behral, so you experience this? Okay, let's do this. So back into this. I'm feeling down. Okay, notice how you're feeling down. So I want you to think about a time when you were actually feeling down. Recall a time when you were just like feeling down. You were not feeling up. You were like, oh, okay. Just remember one of those times. And as you go back in your mind, as you recall that time, okay, without going into that experience, staying out of that experience, like just recall that and notice how you feel in your body. Notice what happens in your body. Because जो memory है, और मैं बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बात कर रहा हूँ अभी, as best as I can. जो भी हमारी memory है, वो हमारी हमारी body में, हमारे muscles के अंदर. It's like sometimes we have this, it's just in our mind. This is where we are processing it, but this is not where we are experiencing it. Okay, we are experiencing it in our bodies. So whatever that memory is, when you think of that unpleasant or like a time when you were feeling down, notice there is some change in your body that you may experience. Notice how your breathing may have shifted as a result of focusing on that. Notice how your shoulders may have dropped as a result of thinking about that. Notice आपके जो चेहरे के जो muscles हैं, उनके अंदर there is some kind of change as a result of focusing on that. Notice आपका level of energy may have dropped and maybe still dropping if you're focusing on that. Because जो second element है, वो है हमारा focus. पहला है physiology, दूसरा है हमारा focus. Okay. Now इसके अंदर और बहुत सारी चीजें आती हैं. मैं अभी नहीं जाऊंगा, पहले 45 minutes में अभी नहीं जा सकते उसके अंदर. But when we get into that, okay, आप गौर करो, जब आप कह रहे हैं focus, and I asked you to think of an experience, and if you started thinking about it, if you started recalling an event, okay, it's a thought in your mind, and you started focusing on that thought. Now, this could be something new, or this could be something very old. This could be something, of the past. Okay. But whether it's a thing of the past or it's something not so old, it's something recent, it is just still a thought in your mind. And as you focus on that thought, your state starts shifting. Okay, I want you to try this first. So I want you to, this time, change your physiology. Okay, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, शोल्डर्स को पीछे कीजिए, अपने चेहरे के मसल्स को एक्सपैंड कीजिए. इट्स लाइक यूर स्माइलिंग. कीप लुकिंग अप. Okay, make that fist. Say yes, 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 and keep that, and इसके अंदर रहते हुए, and then say yes, yes, yes. Okay, and keep doing that. Now अपनी फिजियोलॉजी को मत चेंज कीजिए, अपनी बॉडी में कोई चेंज नहीं लाइए, बट आई वांट यू टू थिंक अबाउट दैट सेम इवेंट, सेम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस. See what happens. Chances are you cannot do that. It will not process. And if you do it, it's something like, I can handle that.
because you are acting from your own state of resourcefulness. Your state has shifted, and as a result of a different state, you will have a different experience. Okay. Tell me, share some of your experiences so far. So, you will notice that difference. You will experience that difference. आप और करो. अल्लाह ताला ने मुझे आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतना इख्तियार दिया है कि अगर हमारा सर यूं झुका हुआ है हम उसको उठा सकते हैं, अगर हमारी कमर यूं बेंट हुई हुई है हम उसको सीधा कर सकते हैं. ओके. हमारे हाथ जो हम उसकी फिस्ट बना सकते हैं, हम उसको टाइट भी कर सकते हैं, हम अपने चेहरे के मसल्स को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, हम अपनी ब्रीदिंग को भी चेंज कर सकते हैं. एंड बाय डूइंग दैट हमारी स्टेट चेंज हो जाती है. ओके, here's one more thing. Okay, I want you to sit straight. Okay, and अपने हाथों की उंगलियों को ये जो what do you call this? Okay, knuckles जो है, okay, आपके चेस्ट के ये जो सेंटर है, okay, यहाँ पे I want you to do this. Let your family know you're just doing an exercise. Okay, tell them YouTube पे कोई मौलवी साहब हैं कुछ एक्सरसाइज करा रहे हैं. रिमेम्बर बहुत साल पहले मैं लाइक मेरा इंस्टीट्यूट था कराची में, तो मेरा ऑफिस था फर्स्ट फ्लोर पे और मेरे बराबर में एक और ऑफिस था. तो नीचे हम लोग कुछ एक ट्रेनिंग में एक्सरसाइज कर रहे थे डूइंग दिस. वो जो नीचे एक दुकान थी, वो दुकान वाला जो है ना वो परेशान हो गए, इसलिए क्या हो रहा है. तो मेरे बराबर में जो ऑफिस था, मेरे हमजुल्फ थे जिनका ऑफिस था, उन्होंने कहा ये जिन्नात वगैरह निकालते हैं तो इसलिए परेशान है जिन्नात निकाल रहे हैं. सो यू कैन टेल पीपल. उस वक्त मेरी दाढ़ी भी नहीं थी, आज यू कैन से ये जिन्नात निकालने की तरकीब में. ओके, बट इफ यू डू दिस, यू नो ओके, दिस इज लाइक गोरिला. ओके, आपने कभी देखा है बाय द वे, कभी किंग कॉन्ग को आपने देखा है? किंग कॉन्ग को आपने मायूस देखा है? वो फिल्मों में ना, वो मायूस किस चक्कर में, आपने कभी गौर किया है? नौजवान लड़कों और से सुनो, किंग कॉन्ग इतना बड़ा, वो भी एक लड़की के चक्कर में डिप्रेशन का शिकार हो गया था. इन चीजों से बचो. ओके, इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना है ये. सो अपने आप को बचाओ इन चीजों से. सो बट व्हेन यू डू दिस, ओके, नोटिस योर लेवल ऑफ एनर्जी. ओके, just notice, just observe. Do you feel high or do you feel low? देखो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है. When things happen and when we are feeling down, हम समझते हैं ये करना कुछ अजीब सा लगेगा. कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं करूं, अगर मैं यस 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 करूं, सब लोग मुझे देखेंगे, कहेंगे पागल हो गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, मुझे बहुत अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं नहीं करूं. लेकिन when something goes wrong and if I'm feeling down and I am sitting like this is okay. वही लोग अब क्यों नहीं फिक्र हो रही कि वो लोग क्या सोचेंगे that I am sitting down like I'm like this. Why? इस तरह से बैठ के मुझे हमदर्दियां मिलती हैं. Oh, I get a lot of attention as well. So you will get attention when you do this. But you know what? हमारे साथ अक्सर होता यही है, जब हम डाउन फील कर रहे होते हैं हमारा तरीका क्या होता है, बजाय इससे कि हम उससे कम बाहर आने की कोशिश करें, बजाय इससे कि हम अपने आप को उससे निकालने की कोशिश करें, वी प्रेफर टू प्ले द विक्टिम. हम उसको कहते हैं यार बस मुझे अकेला छोड़ दो यार, लाइटें वाइटें बंद करो, कोई स्लो सा म्यूजिक लगा के जिसमें हमारी वो कैफियत जो मजीद हमारे ऊपर तारी हो, वो डिप्रेशन हमारा मजीद बढ़े, हम उस कैफियत में जाना शुरू कर देते हैं. इट डजंट हेल्प.
It doesn't help. So help yourself, my friends. Practice this. Practice this, do it regularly, and you will notice a massive difference. It takes practice, remember this. It takes time, it takes practice. Repetition is the mother of skill. आपने मेरे पिछले सेशंस में भी बात सुनी है, मैंने पहले भी आपको कही है. Okay. So practice. So once again, okay, and this is the last time you're doing this. We are close to the 45 minutes mark. So I want you to get into that. Okay. Down वाली state, your physiology. Okay. सेशन खत्म होने वाला है. Okay. मैंने पहले क्यों नहीं साइन अप कर लिया इसके लिए यार, मैंने पूरा सेशन लेना था. अब फिर okay. Maybe you can get recording, but for now, with that, sit straight, bring that smile on your face, breathe high in chest, shoulders back, make that tight fist, and say, yes, 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 that's right. And then think about, just imagine that you are growing bigger, stronger, powerful. Keep that state. Practice that state. Repeat that to yourself. Repeat it again and again. And as you do this, I want you to think of a future time, a situation जहां पे आप चाहते हैं कि आप इस तरह से हो. I want you to imagine yourself stepping into that situation in your future in this positive, powerful state. Not doing yes. There's like, don't do this. Okay. I'm not saying कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपने इंटरव्यू के सामने जाके आपने कहा yes. जॉब नहीं मिलेगी, मैं गारंटी बता देता हूँ अगर आपने ऐसे हरकतें की. But you get into that state before you go into the interview. Okay. देखो जो ओलंपियंस होते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, आप ओलंपिक्स देखते हैं, या जो भी क्रिकेटर्स होते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं, जब गेम खेल रहे होते हैं वो गेम में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिस उन्होंने गेम से पहले की होती है. सो अगर कोई इंटरव्यू में जाने के बाद प्रैक्टिस करे, किसी प्रेजेंटेशन के टाइम पर प्रैक्टिस करे, दैट्स स्टूपिड. यू प्रैक्टिस बिफोर यू गो. यू प्रैक्टिस, यू प्रिपेयर बिफोर यू गो. अभी मेरे ख्याल आ रहा है हमारे यहाँ तो इवन अब जो शादियों के अंदर किसी की मेहंदी होने वाली होती है और माइयों होने वाली होती है, तो घर की बच्चियां जो हैं वो कई दिन पहले से प्रैक्टिस करती हैं ताकि वो आइटम सही से प्रेजेंट कर सकें. ओके. सो जब आप अपना आइटम, इंटरव्यू का आइटम किसी को प्रेजेंट करें, यू नीड टू प्रैक्टिस इन एडवांस. ओके. सो थैंक यू एवरीवन हु जॉइंड मी टुडे. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी. YouTube की मेरी जो ट्रांसमिशन है मैं उसको यहाँ पे बंद कर दूंगा इंशाल्लाह, एंड वी विल कंटिन्यू ऑन Zoom meeting.